guys, welcome back to Job Adda. This is your friend Abhishek and start करते हैं हमारा part 11. In the last video हमने cover किया about how we can evaluate a prefix expression using stack. Now for this particular problem we have a postfix evaluation. तो करना क्या हमको, हमारे पास given एक postfix expression होगी and we have to evaluate the answer. मतलब postfix evaluation क्या होती है, अगर आपको नहीं पता you can also check the earlier videos and afterwards continue with this video. And to start करते हैं postfix evaluation. तो step 1, सबसे पहले step क्या होता है, अगर encountered characters in operand push it into stack. Okay, so before starting I hope आपने question try किया होगा and if not so you can now check the solution for this particular postfix evaluation. Alright, now start करते हैं with the step 1. Encountered characters in operand push it into stack. Step 2, अगर कोई encountered characters in operator, so pop last two operands, operand 1 and operand 2. Now perform operand 2 operator operand 1. Afterwards push the result back to the stack. तो ये हमारा जो step है ये काफी similar है from the last prefix evaluation, but the difference was in the for loop that I have already given you a hint. Anyways, moving on to the step 3. At last print the result by performing a pop operation onto stack. तो एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है एंड बहुत मिलती जुलती है फ्रॉम द प्रीफिक्स वैल्यूएशन की जो एल्गोरिथम थी. नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डायरेक्टली जंप टू द कोडिंग पार्ट. ऑलराइट, सो एग्जांपल इज लाइक 5 3 plus 6 2 divide multiply 3 5 multiply plus. so that's in postfix evaluation and postfix means जो ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेंड्स के बाद में आएंगे. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द आइटरेशन. सो आइटरेशन हम स्टार्ट करेंगे इसको फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स टू द राइट मोस्ट इंडेक्स, मतलब फ्रॉम 5 से स्टार्ट होंगे हम एंड चलते चलते एंड होगा हमारा प्लस 5. बहुत सिंपल है. स्टेप क्या रहेंगे, अगर हमारा एक फर्स्ट आइटरेशन है तो हमारा जब एलिमेंट स्कैन किया तो क्या है वो 5. एज वी नो 5 इज एन ऑपरेंड, we just have to push the value into the stack according to this algorithm. If encountered character is an operand, push it into stack. All right, moving on to our second character of the string, that is 3. So 3 is again an operand, so push the value to the stack. Moving on to third iteration, the iteration 3. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक एलिमेंट स्कैन है वो क्या मिला हमको, प्लस है. प्लस इज एन ऑपरेटर एंड व्हेन वी अचीव एन ऑपरेटर तो उसमें क्या होगा, लाइक पॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड परफॉर्म ऑपरेशंस एंड पुश बैक टू द स्टैक. तो लास्ट 2 एलिमेंट्स क्या है मेरे 3 एंड 5. अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं 5 देन प्लस देन 3 तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8. ऑलराइट, और हमने 8 को पुश कर दिया बैक टू द स्टैक. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट इटरेशन, दैट इज जब हमने स्कैन किया तो हमारा नेक्स्ट इटरेशन क्या है 6. 6 इज एन ऑपरेंड एंड व्हेन एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड वी विल पुश इट इनटू द स्टैक. तो अब हमारा स्टैक क्या हो चुका है 8 एंड देन 6. नाउ इन द फिफ्थ इटरेशन हमारे पास जो ऑपरेंड है, तो कैरेक्टर है वो एक ऑपरेंड है एंड दैट इज 2. सो हमको क्या करना है 2 को पुश कर देंगे बैक टू द स्टैक. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट जो हमने स्कैन किया दैट इज द डिवीजन ऑपरेटर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पॉप लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड वी हैव टू परफॉर्म अ पुश ऑपरेशन ऑफ द रिजल्ट. ऑलराइट, नाउ हमने जब लास्ट 2 एलिमेंट्स किया 6 एंड 2, अगर मैं इसको डिवाइड करूं दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 तो इसका आंसर आ रहा है 3. जो हमारे स्टैक के अंदर वैल्यू है दैट इज 8 एंड देन 3. Moving on to our next iteration, that is the 7th iteration. And when we iterate the 7th iteration, the element scanned is multiplication sign. Now, as we know, there is a multiplication sign. So, we have to again pop 2 elements and perform a multiplication operation and push the result back to the stack. So, multiplication operation, the last 2 elements should be 3 and 8. And when we perform a multiplication operation between these 2 operands, that is 3 and 8, so our answer would be 24. And the stack is now, the value of the stack is now 24 only. Moving on to our next iteration, that is when we scan an element is 3. So this is our 3. This is our next operand. Now as it is an operand, so we will push it into the stack and now our stack would be 24 and then 3. Moving on to our next scan character, that is 5. So as 5 is an operand, we will push it into the stack. Now the stack would be 24, then 3 and then 5. The next scan character would be an multiplication sign. So when this is so we just have to like pop 2 elements from the stack. So I'll pop 3 and 5 and I'll perform a multiplication operation among them. So 5 multiplied by 3 is equals to 15.
and the answer would be stored into the stack. So our stack is now 24 and 15. So moving on to our last element of this string, so that is plus, and we will when we have to perform, and now we have to perform the plus operation between the last two elements of the stack, and that is 15 and 24. And as you know that when we add 15 plus 24, the answer is 39. So at the end, when we have done the traversal of the string, there's a particular value remaining in the stack, and that is the equivalent answer of this particular postfix expression, and that is 39. At the end, we'll just return the top value of the stack, and I'll return 39. Alright guys, so that was about the algorithm, like how we will be solving a particular postfix evaluation. Also हमने एक example discuss कर लिया है. Now let's code this particular problem. So suppose I'll make a string as, and we will store the value of this particular string जो हमने अभी just discuss किया. So here we go. So this is our respective string, and इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 39 जो हमने डिस्कस किया है. Now I'll make a function of integer type and I'll name it as postfix evaluation. In the parameters मेरे पास आ रही होगी एक string s. Now सबसे पहले बनाते हैं एक stack of integer type and I'll name it as again as st. Now with the help of for loop I'm traversing through a string. So int I is equals to 0 semicolon, I should be less than f dot length semicolon and I plus plus. हमने जो प्रीफिक्स के अंदर जो प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग ट्रैवर्सल करी थी वो करी थी फ्रॉम द एंड इंडेक्स टू द स्टार्टिंग इंडेक्स. बट इन केस ऑफ लाइक पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन जो हम ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू द एंड इंडेक्स, so there is a much more similarity between the whole code, and that was like बिल्कुल जो हमने अगर हमने कोई प्रीफिक्स वैल्यूएशन सीख लिया तो पोस्टफिक्स वैल्यूएशन इज नॉट अ बिग डील फॉर अस. बस हमको एक फॉर लूप को रिवर्स करना है, दैट्स इट. ऑलराइट, नाउ सो हमको करना क्या, अगर मेरे जो स्कैन कैरेक्टर अगर कोई ऑपरेंड है, सो अगर मेरा एस ऑफ ith इंडेक्स इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और अगर मेरा एस ऑफ ith इंडेक्स अगर ये छोटा है या फिर बराबर है किसके 9 की, so that means it is an operand. And if a scan character is an operand, we just have to push the value into the stack. So I'll do stack dot push s of I minus 0. And आपको अगर ये टर्म समझ नहीं आ रही तो I'll recommend you to check the last वीडियो जो हमने अभी कवर किया for this particular prefix evaluation. हमने prefix evaluation में बताया ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं. Alright. तो if this is अगर कोई operand है तो उसको हम डायरेक्टली पुश कर देंगे. ओके, बट अगर ये ऑपरेंड नहीं है तो वो क्या करना है, तो वी जस्ट हैव टू लाइक पॉप top two element from the stack. So suppose I'll name it as int op1 and I'll store stack dot top element in this, and after this I'll just remove this element, so with the help of pop operation. So stack dot pop. Now again I'll make an operand 2 named variable and I'll store the value of stack dot top. Afterwards, I'll again perform a pop operation to remove this particular element from the stack. And now once this is done, with the help of switch statement, what I have to do, I'll check if s of ith index in this, अगर जो हमारा केस है ये है एक प्लस का साइन है, so हमको क्या करना है, we just have to push the value stack dot push operator 2 plus operand 1. That's it. And afterwards यहां से कर देंगे हम break. Alright. So moving on to our next case, that is suppose case multiplication. Suppose case subtraction. For this particular case again हमको सेम चीज करनी है, stack dot push. I'll do operator 2 माइनस ऑपरेटर 1 एंड दैट्स इट. एक चीज जो हमने ध्यान करने वाली वो ये चीज है जो हमने लास्ट वीडियो में जब हमने प्रीफिक्स वैल्यूएशन पढ़ा था, इन दैट प्रीफिक्स वैल्यूएशन हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि ऑपरेटर 1 प्लस ऑपरेटर 2, बट इसके अंदर हम उल्टा कर रहे थे, ऑपरेटर 2 प्लस ऑपरेटर 1. एंड दिस इज बिकॉज जो हम लास्ट प्रीफिक्स वैल्यूएशन जो हम चला रहे थे हमारा फॉर लूप,
वो चल रहा था एंडिंग इंडेक्स से लेके स्टैटिक इंडेक्स से, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा फॉर लूप चल रहा था। बट फॉर दिस पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन जो हमारा फॉर लूप चल रहा है, ये चल रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑपरेंड 2 माइनस ऑपरेटर 1। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स यहां से हम कर देंगे ब्रेक। तो मूविंग ऑन टू अवर केस थर्ड, कि अगर जो मेरा एस ऑफ जो ऑपरेटर है, जो एक एनकाउंटर्ड ऑपरेटर में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमको क्या करना है, तो हम अगेन हम स्टैक के अंदर एक एलिमेंट पुश कर देंगे जो रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेटर 2 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर 1, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल ब्रेक दिस पर्टिकुलर केस। मूविंग ऑन टू अवर केस सपोज डिवीजन, so for this particular case again stack dot push s of I not s of I operator 2 divided by operator 1, and afterwards break. Also guys there is a default statement, अगर मेरा जो स्विच के अंदर s of I इंडेक्स के अंदर इनमें से कोई भी लूप नहीं आता है, तो उस टाइम क्या करना है आपको, डिफॉल्ट केस होता है, एंड दिस डिफॉल्ट केस हम यहां से जस्ट सिंपली कर देंगे ब्रेक। ऑलराइट, तो दैट वाज अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। अगर हमने सारे वैल्यू जो कोई अगर ऑपरेटर आता है तो उसको हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका जो रिजल्ट है वो स्टैक के अंदर वापस पुश कर देंगे। बट इनकेस अगर कोई ऑपरेंड आता है तो उस वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एंड वी विल पुश द वैल्यू बैक टू द स्टैक। दैट्स इट, एंड वन दिस फॉर लूप इज फिनिश्ड लाइक राइट हियर, तो विल जस्ट सिंपली यहां से हम रिटर्न कर देंगे एज स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है। दैट्स इट। नाउ अब हम करते हैं इस फंक्शन को कॉल, दैट इज जो हमारा पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन फंक्शन कॉल करते हैं, इसका पैरामीटर हम पास करेंगे स्ट्रिंग, एंड एक वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्टफिक्स स्ट्रिंग। ऑलराइट गाइस, तो इस कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी जो हमारा आउटपुट आ रहा है थोड़ा गलत आ रहा है, दैट इज -5 आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज हम चेक करते हैं, हमने एक प्रीफिक्स एक फंक्शन बनाया, एक पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन इन द पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड एज stack, and in the for loop starts from 0 to the s dot length. All right, in the if statement it should be end, sorry my bad, ये और नहीं होना चाहिए, एंड होना, बिकॉज हमारा कोई भी ऑपरेंड है, ये दोनों में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ वी विल अगेन रन दिस कोड। ओके, सो कोड रन हो चुका है, एंड एब्सोल्युटली फाइन। जो हमारा आंसर आ रहा है, यू कैन सी इट्स 39, राइट। So that was about that postfix valuation, and that was the algorithm, the easiest algorithm that I know. There could be multiple approaches for solving the same question, but जो हमारे तरफ से जो best approach है, that approach we have discussed in this particular video. Already इस क्वेश्चन को वापस समझ लेते हैं, वापस देख लेते हैं। postfix फंक्शन बनाया जिसमें एक स्टैक है of integer type, then we with the help of for loop and traverse through a string from 0th index to the end index. बट इन केस ऑफ एन प्रीफिक्स वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, हमारे फॉर लूप को उल्टा चलाते हैं, दैट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मेरा कोई ऑपरेंड आता है उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे विद बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इंटीजर वैल्यू। एल्स अगर मैं कोई ऑपरेटर है तो क्या करना है, वी विल जस्ट पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। आफ्टरवर्ड्स यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट हम ये चेक कर लेंगे कि अगर वो प्लस का ऑपरेटर एनकाउंटर है, माइनस का, या फिर मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। अगर कोई भी ऑपरेटर एनकाउंटर्ड है तो हम उस ऑपरेटर के अंदर वो 2 पॉप्ड ऑपरेंड्स के जो इक्विवेलेंट रिजल्ट है उसको हम कैलकुलेट करके स्टैक के अंदर अगेन पुश कर देंगे। एंड वंस दिस इज डन, जब हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा एट दिस पर्टिकुलर स्टेप, वी विल जस्ट रिटर्न द टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक, एंड दैट्स इट। तो ये हो चुका हमारी बहुत इजीएस्ट एल्गोरिथम टू इवैल्यूएट एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। ऑलराइट गाइस, so that was all about this particular video. For more interesting videos